को summarize करूं, so you have three things in it. You have laws of magnetism to study, you have magnetic properties to study, and you have electromagnetism to study. अच्छा, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, तो रिमेंबर कि मूविंग चार्ज विल ऑलवेज रिजल्ट इन मैग्नेटिज्म. जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, दैट विल रिजल्ट इन magnetic field. That will result in magnetic field. So magnetism comes into existence as a result of a moving charge. Magnetism comes into existence as a result of moving charge, right? सबसे पहली बात ये है. And जब मैं magnetic field की बात करता हूँ, it was first discovered as an oxide of iron. First natural magnet था, Chinese ने इसको discover किया था. It was an oxide of iron. इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट. क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट में चाइनीज ने ये बात देखी कि जब भी हम इसको अलाइन करते हैं, इट वाज अ सिंपल रॉक, लेट्स से ये इसकी डायरेक्शन थी, तो व्हेनेवर दे लेट इट सस्पेंड फ्रीली, whenever they let this rock to be placed freely, it always aligned in one direction. It always aligned in one direction. So this led to the navigation that we are using these days at sea or on the land. That's how magnetism came into existence. अच्छा, ये सारी information, that was an introduction to the chapter. ये सारी information अगर आपको पता ना भी हो ना, तो एग्जामिनर ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा. बस सिर्फ ये बात पता होना चाहिए कि मूविंग चार्ज विल रिजल्ट इन मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्ज विल रिजल्ट इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, जब बात करते हैं हम मैग्नेट्स की, तो वी हैव टू थिंग्स टू कंसिडर. नंबर वन, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं. व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो आपके पास तीन टाइप की चीजें आती हैं. अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो दे आर द मटेरियल्स व्हिच कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स. किसी भी मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक मटेरियल रखो, तो दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज ओनली अट्रैक्टेड. इसमें कोई और ऑप्शन उसके पास नहीं होता. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑलवेज attracted by magnets. Then you have non-magnetic materials. These are materials which are uh, neither attracted nor repelled by magnets. मैग्नेट के करीब लेकर आओ तो कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको. And then you have magnets. Magnets can be attracted, magnets can be repelled by another magnet. अगर like poles होंगे तो repulsion होगी, unlike poles होंगे तो attraction होगी, right? यहाँ तक बात समझ आ गई बेटे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद you should know a few examples of magnetic and non-magnetic material. तो मैंने इसको summarize कैसे किया हुआ बेटे? BCWP. You may do it any way that suits you or that you think is more easy for you to learn. So BCWP. B is brass, BC. B is brass. C is copper. W is wood. P is plastic. These are all materials which can be considered as non-magnetic. On top of that, you have another material, that's aluminum. So these are the materials which are non-magnetic materials. Then it's NICS. NICS. What? NICS. NICS. So NICS are the materials which you can consider as magnetic. What is NICS? N stands for nickel, I stands for iron, C stands for cobalt, and S stands for steel. So these are magnetic materials. BCWP, brass, copper, wood, plastic. NICS, NICS, nickel, iron, cobalt, steel. These are non-magnetic. So BCWP is non-magnetic. NICS is magnetic, right? BCWP non-magnetic, NICS magnetic. ठीक है?
These are the materials that you have to learn. इसका पता होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े. जी सर. ऑलराइट, फिर उसके बाद है परमानेंट मैग्नेट्स. जब मैं बात करता हूँ परमानेंट मैग्नेट्स की, परमानेंट मैग्नेट्स का पता होना चाहिए. व्हाट आर दे? परमानेंट मैग्नेट्स आर मैग्नेट्स which can retain magnetism for long time. Retain magnetism for a long time. वो सारे मैग्नेट्स जो देर तक के लिए मैग्नेट रहते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स. एंड देन आपके पास आता है temporary magnets. So they do not retain magnetism. They do not retain magnetism for a longer time. ठीक है बेटा. उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की. हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. उसमें क्या क्या था? मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और उसमें मैग्नेट्स हैं. मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेट्स. फिर हमने देख लिए उनके एग्जांपल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है बेटा? निक्स, NiCS, निकल आयरन कोबाल्ट स्टील. निकल आयरन कोबाल्ट स्टील. नॉन मैग्नेटिक में क्या आता है बेटे? BCWP, ब्रास कॉपर वुड प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम. एंड उसके बाद हमने बात की मैग्नेट्स की. टेम्पररी मैग्नेट्स हो सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हो सकते हैं. राइट, दो टाइप्स ये हो गए. परमानेंट मैग्नेट्स, they retain their magnetism for a longer time. Temporary magnets, they do not retain their magnetism for a longer time. उसके बाद आपके पास क्या आता है? टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स. अब हम देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट्स की कितनी टाइप्स हैं. नंबर 1, you have steel magnets. Number 2, you have ceramic magnets. What are steel magnets? Steel magnets are basically made of an alloy of iron. Made of an alloy of iron. While ceramic magnets are made of ferrite powder. Ferrite powder, right? So steel magnets are made of alloys of iron. Ceramic magnets are made of ferrite powder. Then you have another property of ceramic magnets, that is they are brittle. They are brittle. They can easily be broken. The next thing that we need to know in this is the magnetic properties. Definitely, you have a pole at one end and you have a pole at two ends. So every magnet will have two poles anytime, anywhere. It will always consist of two poles. So one property of the magnet is that it has poles. One is the north pole and the south pole. So the next property is that if you hang this magnet freely, if you allow this magnet to move freely, it always align in a north-south direction in such a way that north of the magnet points the north of the earth. The north of the magnet points the geographic north of the earth. We call this the north seeking pole. We call this the north seeking pole. Right? अच्छा, अब हमें ये पोल्स का कैसे पता चलता है? देखो, जब भी you allow a magnet, you allow a magnet to be placed somewhere where there are iron filings or any magnetic material or any magnetic pieces, you will always find that all of those iron filings or iron pieces, they will, majority of them will get attracted to the two ends, will get attracted to the two ends. So it has two poles. It has two poles, right? Then laws of magnetism, you already know that you have like poles, you have unlike poles. If there are like poles, there will always be a repulsion. If there are like poles, there will always be a repulsion. If there are unlike poles, there will always be an attraction. This is what you know from your very early childhood. उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट की, तो बेटा मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अट्रैक्ट होगा. मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अट्रैक्ट होगा. चाहे मैं इधर मैग्नेट रखूं, उसका एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है,
मेरे पास एक और मटेरियल है जिसका ये वाला p एंड है और दूसरा वाला q एंड है. If I bring p close to the north pole, there will be attraction. If I reverse and I bring q close to the north pole, it will also be attracted. If I switch the magnet, I bring the north here, south there, and now I bring end P of this material, now also attraction. If I bring end Q of this material, now also attraction. So basically, there are three things, three laws. Like poles repel, unlike poles attract. A magnet and magnetic material always attract, right? Is this clear, bete? Yes, sir. उसके बाद अगली जो चीज है, that is testing a magnet. Let's say you have three materials A, B, C. Of these three, you do not know which one is a magnet, which one is a magnetic material, or which one is a non-magnetic material, right? You do not know. So you have to test this. Does anybody know any experiment how to do this, how to test this? सर आप B का end A के साथ align करके रखेंगे and then you're gonna check if it's attracting or repelling. And then you're gonna align C the same way in a straight line. आयरन So, फिलिंग देंगे द अगर वो आयरन फिलिंग्स विल अट्रैक्ट द मैग्नेट for like I guess it's magnetic. all right. Hina and Alicia, any guess from your end? No, sir. All right. So, okay. चलो कुछ हद तक वो कर सकते हैं जो मुर्ख और शांसे ने कहा, पर मसला ये है कि उससे हमें ये तीनों बातें पता नहीं चलेंगी कि मैग्नेट कौन सा है, मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक कौन सा है, राइट? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल भी अट्रैक्ट होता है और अनलाइक पोल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा. तो इसका एक तरीका है, एंड व्हाट इज दैट? आप क्या करोगे, ये मैग्नेट आपने फ्रीली सस्पेंड कर दी है. कैसा? यू ब्रिंग अ नोन मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो, यू सस्पेंड इट फ्रीली, यू ब्रिंग क्लोज टू दिस मटेरियल ए. क्या करोगे बेटा? यू ब्रिंग क्लोज टू दिस मटेरियल ए. If the material is repelled in the first sight, so it's a confirmation test that this material A is a magnet. रिपल्जन पे आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. पहली बार में रिपेल हो गया तो कंफर्म हो गया ये मैग्नेट है. क्या है? Magnet. क्यों? क्योंकि अगर ये मैग्नेट होगा तो इसका मतलब है इसका नॉर्थ पोल यहाँ कहीं आ गया है और सिर्फ लाइक पोल्स रिपेल करते हैं. तो अगर इसके ये नॉर्थ पोल है, जाहिर है ये साउथ पोल होगा, सो इट्स अ मैग्नेट. अगर तो रिपल्जन नहीं हुई, ये इसका एंड P है, ये इसका एंड Q है, आप ये मैग्नेटिक मटेरियल B लेकर आए और B पर there was no repulsion, rather क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ. क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ. तो जब अट्रैक्शन हुआ, अब मसला क्या है? अट्रैक्शन, अच्छा अट्रैक्शन से पहले मैं एक और बता देता हूँ. लेट्स से आप एंड P लेकर आए तो ना अट्रैक्शन हुई ना रिपल्शन हुई. नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन और रिपल्जन. तो यहाँ से क्या कंफर्म हुआ? दिस मटेरियल इज Non-magnetic. नॉन मैग्नेटिक, राइट. सो पहला टेस्ट. तीसरी चीज क्या की? आप मटेरियल सी लेकर आए एंड मटेरियल सी लाने पर आपको पता चला
कि जब आप P लेकर आते हो करीब में तो क्या होगा भाई? P करीब लेकर आने पर you find an attraction. You find an attraction. So if P attracts, it can mean two things. Number one, it means maybe this material C is a magnetic material. Is a magnetic material. Or maybe it is the opposite end of a magnet. So it can be a magnetic material or opposite end of a magnet. तो इसका मतलब अट्रैक्शन पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती. अट्रैक्शन पे दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर ये मैग्नेट है. नाउ हाउ टू सर कंफर्म? फिर उसकी ऑपोजिट साइड से करके चेक कर सकते हैं कि अगर वो रिपेल Exactly, करता है तो दैट मींस इट्स अ exactly, मैग्नेट. perfect. So now bring the other side, bring Q. Hmm? You'll bring in Q, and now once again if there's attraction, so that confirms that this is a magnetic material. If this time there is repulsion, that means it's a magnet, right? Because repulsion is the confirmation test of magnet, right? So दूसरा एंड लाने पर अगर repulsion हो रही है तो magnet है, attraction हो रही है तो magnetic material है, magnetic material है, right? Is this clear? Yes. Shanze, Murg, Yes, sir. Hina, Vadha. Also, Vadha is not here. Right. So ये हमने कर लिया. उसके बाद एक चीज और है. अच्छा, शानजे एंड क्या नाम है, मुर्ग. यू पीपल टोल्ड मी मैग्नेटिज्म, बट मुझे आप लोगों ने एग्जैक्ट सिलेबस दिखाया नहीं जो आपका है, जो भी वट एवर टेस्ट इज कमिंग अप. सर यही है. अच्छा, ये देखो, ये आपके पास दिस इज हाउ यू टेस्ट अ मैग्नेट. ये सब मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है. एंड दिस इज ऑन GCR. Then magnetic induction. Magnetic induction is what? It's a process. What is magnetic induction? It's a process. What process? A process in which you can induce magnetism. In which you can induce magnetism. Or in which you can create magnetism where? In an unmagnetized magnetic material. In an unmagnetized magnetic material, right? And you need to make sure there's no contact in this process. There is no contact in this process. Okay? So, अब जरा let me remind you of this. When I talk about induction, induction is used in our syllabus three times. Three times. First, it's used in here, simple magnetism. Simple magnetism. Secondly, it's used in uh, static electricity, electrostatic induction, and thirdly, it's used in electromagnetic induction in AC generator. Electromagnetic induction, right? Electromagnetism. So these are the three areas of physics where we use this term induction. So induction means you are doing something without contact, doing something without contact, without any physical contact, without physical contact, right? So what does that mean? Let's say on the right you have a soft iron bar, and on the left you have a permanent magnet. So this permanent magnet would definitely have its field, and when I talk about its field, what will it do? It will make a south pole here. It will make a south pole here due to its field. And
A south pole here means a north pole there. So, was there any physical contact between these two magnets? No, No. no. These two objects, there was no physical contact. Rather, one was just the iron bar, and the other one was just a bar magnet. But when you bring them close together, immediately the iron gets attracted towards the permanent magnet. The iron gets attracted towards the permanent magnet. Reason being कि आपके पास this has induced a magnetism inside it. This has induced a magnetism inside it. So when the north pole of the permanent magnet is brought close to the iron bar, it will induce an opposite S pole near end of the soft iron bar. Right? So magnetic induction is the process of inducing magnetism. Magnetic induction is the process of induce magnetism where in an unmagnetized magnetic material. This was unmagnetized iron bar. This was unmagnetized iron bar. So you have induced a magnetism inside this. Right? I hope I'm making myself clear. Yes, sir. If you have any question, you people can just interrupt in between. So right, magnetic theory. The next thing is magnetic theory. What does the magnetic theory states? It tells us that let's say if you split this bar magnet into three different pieces, you will find for each of these three pieces this original magnet had an N pole and an S pole. Now, each of these individual pieces will possess an N pole, S pole, N pole, S pole, and so on. Right? So, that means if you keep breaking this magnet into smaller and smaller and smaller pieces, every time, every piece will possess two poles. Will possess two poles. Right? So when you keep on breaking it and you reach the smallest particle, even then it will have two poles. Even then it will have two poles. You reach to the atomic level of this material, you will find that even that atom has two poles, right? So if we keep cutting the magnet to smaller pieces, even the smallest piece, that is the atom, would be magnetized with two poles. A magnet can never exist as a single pole, or what you call as a monopole. So if I generally talk about magnets, they are supposed to be made up of tiny magnets. A magnet is supposed to be made up of tiny magnets, and we call these tiny atomic magnets. क्या बोलते हैं इसको? Tiny atomic magnets. Let's say you have this magnet. This is a magnet, and what do you find over here? You find that each of these tiny, it's represented by an arrow. Each of these tiny magnets is represented by an arrow, and you see all of them aligned in one direction. You see all of them aligned in one direction, right? So, tiny magnets at the end splay out due to repulsion. Why? Because let's say if this is a tiny atomic magnet, then let's say this end is the north pole, this is the south pole. You find this is the north pole, south pole, south pole. So definitely these are like poles. What? Like poles. Like poles will repel. Like poles will repel. That's why you see these ends splay out. Let's say if these ends are the north pole, so once again like poles repel. Like poles repel. These ends also splay out. Right? So tiny atomic magnets, every magnet is made up of tiny atomic magnets, which we call magnetic domains. What do we call? Magnetic domains. Tiny atomic magnets are known as tiny atomic magnets are called magnetic domains. Magnetic domains. Right? So, if you get successful in aligning all these tiny atomic magnets inside a material, that means you have reached a level what we call the saturation level. What? Saturation level.
This is the strongest state in which a material may exist as a magnet. Why? Because all the tiny atomic magnets have been aligned. If these tiny atomic magnets would have not been aligned, they would have been looking just like this. See, this in this direction, the other one is going in an opposite direction. This is going here, the other one is going there, right? So ये आपके पास सबकी directions उलट हैं, आगे पीछे हैं, haphazard है, random directions है. So basically हर एक tiny atomic magnet का direction disturb हुआ है. That's why this material is a magnetic material, but it does not act as a magnet. It does not act as a magnet. ये किसी और मटेरियल को मैग्नेट नहीं बना सकता. हाँ, मैं इसके करीब लेकर आऊंगा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक बार मैग्नेट, तो what will happen? It will cause these unaligned magnetic domains to get aligned just like these, and this makes it a magnet. If all of them are aligned, then we have reached the magnetic saturation. That means it's the strongest magnet it can be, right? सर Hmm. सर आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स के नोट्स हैं? कौन शानजे आप बोल रही हो? जी जी, 2 वीडियोस तो मैंने अपलोड की हुई हैं वैसे छोटे छोटे, लेकिन नोट्स भी जीसीआर पे डाले हुए मैंने. नहीं ठीक है, मैं वहाँ चेक कर लूंगी, थैंक यू. क्यों न्यूक्लियर की क्यों चाहिए आपको? सर वो मुझे न्यूक्लियर रिवाइज नहीं आ रहा मुझसे में. नहीं आ रहा, नहीं पागल मुझे हो. रिवाइज करना है. चलो देख लेना, वो है वहां पे. सही है. चलिए सो ठीक. हम सेइंग ये वाली बात समझ आ गई. जी यहाँ सर. पर ये मैग्नेट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सब हैप्पैज़ार्ड अलाइनमेंट हुई हुई है, सो दे कैंसल आउट द रिजल्ट each other's effect, so there is no magnetism. This is an unmagnetized magnetic material. All right. Then, talking about the storage of magnets, we need to know how to store the magnets. If we just place a magnet like this, so what will happen? It will have its magnetic field. It will have its magnetic field going in all directions. Right? Stray magnetic field lines. This will make it a weaker magnet. It will make it lose its magnetism. So to avoid that, what we do? We always store magnets in pairs. We always store magnets in pairs, right? And at the two ends, you can see we'll attach iron clippers, or what we call iron keepers. They are just tiny strips of metal, tiny strips of iron. We just put them at the ends of these two magnets so we can store them safely, securely, so that their magnetism lasts for a longer. And how does these clippers makes it its magnetism last for longer? See, this magnet, which had its magnetic field going straight in all directions, in all directions like this, right? So what will happen when I keep these iron keepers at the ends? It will cause these magnetic field lines to be concentrated inside. It will cause these magnetic field lines to be concentrated. It will cause these magnetic field lines to be concentrated inside. So बेटा ये वाली magnetic field जो यूं बाहर जा रही थी, rather than going out, it will get inside. It will get inside. Because क्या हुआ, ये जो आपके पास permanent magnet था, इसने इस iron keeper को magnetize कर दिया. So this is how the magnetic field would be now. Just inside here. So your magnetic field is concentrated. Your magnetic field is concentrated. It's not going stray in all directions. It will retain its magnetism for a longer time now. Yes, is this clear? Yes, sir.
sir. Magnetic. बोलो बेटा. All right. So magnetic saturation is what I have already discussed. It's when magnet gains its maximum possible strength when all tiny atomic magnets are aligned. Right? All right. How was the background music? 10 out of 10, Very sir. good. हाँ. No, sir. अच्छा था ना? Sir, very nostalgic. Real. So, ऐसा होता है. ये मजा होता है ऑनलाइन क्लासेस आइंदा नहीं का. होना चाहिए, sir. वैरायटी मिलती है. वैरायटी मिलती है आपको. सो ये कौन सी एनर्जी थी जिसने आपको डिस्टर्ब किया? Sir, बैरूनी मुदाखलत. All right, great. But what is the name for this बैरूनी मुदाखलत? ये कौन था? साउंड एनर्जी थी. एंड साउंड की वो वाली एनर्जी जो वांटेड नहीं थी. सो नॉइज थी. Noise pollution, sir. चलो खैर. अब देखो एक चीज है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. हमारे सिलेबस में था 2022 तक. अब डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है. लेकिन मैं एक हल्का सा टच इसका फिर भी दूंगा क्योंकि इसको बताए बगैर मैग्नेटिज्म कराना ऐसे लगता है मैग्नेटिज्म नहीं कराया. ठीक है. सो मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करें, what is it? It's the process of removing magnetism. It's the process of removing magnetism. And how you remove magnetism? You just do the reverse. जब आप मैग्नेटाइज करते थे तो उसके लिए क्या किया बेटा आपने? आपने अलाइन किए इन एटॉमिक डोमेन्स को, राइट? तो अब आपने क्या करना है? डीमैग्नेटाइज करना है. तो इन एटॉमिक डोमेन्स को डिसअलाइन करना होगा. क्या करना होगा बेटे? यू हैव टू डिसअलाइन. सही है. So demagnetization is the process of removing magnetism by disaligning the atomic magnets. And how you make them to disalign? You make them vibrate vigorously. You make them vibrate vigorously. And how you make them vibrate vigorously? Number one, you can heat up the magnet. You can heat up the magnet. So when you heat up the magnet, what will happen? The tiny atomic magnetic domains, these, they will start vibrating very vigorously. And then they vibrate vigorously, definitely they will lose their alignment. They will lose their alignment. And when they lose their alignment, they will eventually become like this, right? So these tiny atomic magnetic domains are disaligned, This magnet will become unmagnetized magnetic material, right? The second thing is hammering. The second thing is hammering. Hammering is just striking the magnet with a hammer slowly and gradually. This will also do the same thing. It will disalign the tiny atomic domains by making it vibrate vigorously. ठीक है. एंड लास्टली क्या है? इलेक्ट्रिकल मेथड. इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या करते हो भाई? यू पिक अप अ कॉइल. जैसे लेट्स से ये कॉइल है. नजर आ रहे बेटे? Yes. ये Yes, कॉइल है. sir. एंड इस कॉइल में आप क्या करते हो? इस कॉइल में जिस मैग्नेट को आपने डिसअलाइन करना है वो प्लेस कर देते हो. यहाँ पर आप सप्लाई करते हो ऑल्टरनेटिंग करंट. क्या सप्लाई करते हो? ऑल्टरनेटिंग करंट. एंड देन ग्रेजुअली you move this magnet out. You move this magnet out. तो जब इस मैग्नेट को आप बाहर लेकर जा रहे होगे, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया होगा, तो उससे क्या होगा? इसके टाइम, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है. एक टाइम क्लॉकवाइज तो दूसरी दफा एंटी क्लॉकवाइज, राइट? द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली. So direction of current changes continuously. It causes the magnetic field direction to reverse continuously due to the coil.
सर राइट? बेचारा मैग्नेट कंफ्यूज हो जाता होगा किस साइड पे अट्रैक्ट होना है। जी। एंड जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो इस बेचारे की जो ये वाली शक्ल थी ना, ये वाली, ये कन्वर्ट होके ये वाली हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है? अनमैग्नेटाइज्ड। राइट? सो आपने कंफ्यूज कभी नहीं होना। किसी ने कहा था आपने घबराना नहीं है, इसी तरीके से आपने कंफ्यूज कभी नहीं होना। ठीक है? वरना ये मैग्नेट वाली सिचुएशन हो सकती है पेपर में कि जो आता हो आपको वो भी इधर उधर हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट। खैर, इज सर दिस ये क्लियर? पूरा डीमैग्नेटिज्म नहीं आ रहा। जी, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन, ये इलेक्ट्रिकल मेथड भी मैंने करा दिया। ठीक है। उसके बाद सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? सोलेनॉइड इज बेसिकली अ कॉइल। आप एक कार्डबोर्ड लेते हो, इस उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप वायर को रैप करते हो। क्या करते हो? वायर को रैप करते हो। ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड लेट्स से, एंड इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने किया एक वायर को रैप। एक मिनट। जस्ट लाइक दिस। So this is a solenoid. This is a solenoid. Solenoid is a coil of several hundred turns. A coil of several hundred turns, right? That's wound on a cardboard. Clear होगी बात बेटे? Yes, sir. Alright. So इसी तरीके से ये तो हमने सारी की सारी डीमैग्नेटाइजेशन करा दी। अब मैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है? मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। मैग्नेटाइज करने के भी जितने मेथड्स थे वो सारे के सारे निकल गए हैं, तो इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है? कोई मसला, कोई परेशानी? नो सर। ओके। अब जरा एक काम करते हैं, अगली जो चीज हमने डिस्कस करनी है दैट्स बेसिकली magnetic field and plotting compass. Before I move on to magnetic field, the plotting compass, मैं चाहूंगा मैं जरा आपसे डिस्कस कर लूं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? बेसिकली इट्स अ रीजन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट्स अ रीजन। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? इट्स अ रीजन रीजन। where a magnetic force is experienced, where a magnetic force is experienced by any magnetic object, by any magnetic object placed in the influence of field, placed in the influence of field. So, or you can just simply say a magnetic field is a region, it's an area where a magnetic force is experienced by a magnetic pole. Hmm? Magnetic force is experienced by a magnetic pole. Now, if I talk about magnetic field, let's say if I'm having a bar magnet, you people must have an idea of the field lines of a bar magnet now. Hmm? This is how the field of the bar magnet looks like. Okay, so let's say this is the North Pole, this is the South Pole, and I mark the field lines. So this is away from north towards south, away from north, away from north, away from north, away from north, towards south, towards south, towards south. Magnetic field is always away from north towards south, right? Now see, what does this arrow represent? Examiner might ask you, what does the direction of a magnetic field line represent? So this is the direction of magnetic field line. This represent what? This represent the direction of force. This represent the direction of force.
Direction of force. Force on what? Direction of force on a magnetic north pole. Direction of force on a magnetic north pole. Direction of force on a magnetic north pole. What do I mean by that? If I place a north pole over here, this is the north pole, this is the south pole, where will it experience a force? That way. If I place a north pole over here, where will it experience a force? Over there. Yes, sir. If I place a north pole over here, where will it experience a force? Right there. Hmm? So basically, these field line direction, these arrows, these arrows represent what? These arrows represent the direction of force. Direction of force on a north pole when you place it here. Right? So magnetic field is a region where a magnetic pole will experience a force, and the direction of magnetic field line represent the direction of force on a magnetic north pole. Direction of force on a magnetic north pole. Is this clear? Yes, sir. All right. Now see one thing. Let's say I have this box. I pick it up and I place it there. What do you see? How many lines are there inside the box? 3. 4, Three. How many lines here? 1. How many lines here? 2. Two. How many lines here? 1. 1. One. So basically, you see that lines at these poles are more closer together. Magnetic field lines at the poles are more closer together. Closer the field lines would mean stronger the magnetic field. Closer lines mean stronger stronger magnetic field, right? So magnetic field is the strongest at the poles. Why? Because the number of lines per unit area are more. Number of lines per unit area are more. Or if I zoom it further, you will see the gap between these two lines is just this much. But the gap between these two lines is this much. Hmm? The gap between these two lines is just this much, but between these two lines it's this much. Hmm? So at this point P, the magnetic field is weaker than at this point Q, right? So closer the field lines, stronger the field, and further away the field lines, weaker the field. Is that understood? Yes, sir. Direction of field line represent the direction of force on a magnetic north placed there, and the magnetic field is basically an area where a magnetic pole will experience the force, right? And is always direction of field lines is always away from north, and towards south. Clear, bete? Yes, sir. ऑलराइट सो ये सब हो गया. अब जरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कैसे करें. Plotting of magnetic field lines. And when I talk about plotting of magnetic field lines, here's the first method. You can use iron filings to trace the magnetic field line. And for that, yes, मैं एक काम करता हूँ. यार मेरा फोन ला के देना. What will you do? You will basically take you will take a cardboard just like this. On that cardboard,
जस्ट अ मोमेंट, किधर गया? हाँ ये अच्छी हो गया। यस, okay, I'm just sharing a link on WhatsApp group. तो वो अभी देख लेना, लेकिन अभी मैंने शेयर नहीं किया, तो अभी जरा यहाँ डायग्राम पे फोकस करो। ठीक है, यू हैव दिस कार्डबोर्ड एंड अंडर दिस कार्डबोर्ड you will place a magnet. What will you place? A bar magnet, right? We'll place a bar magnet under this. Okay, let's say this is north and this is south. So this magnet is placed underneath the cardboard. This is placed underneath the cardboard, right? Now what you will do is that you will sprinkle iron filings on this. You will spread out iron filings on this, right? Iron filings. And when you sprinkle the iron filings, you would gradually and slowly tap this cardboard. You will tap this cardboard, right? When you tap it, what will happen? You will find that these iron filings which were spread out haphazardly just gets aligned like this, right? Yes, sir. तो सर Okay. इफ इट्स प्लेस्ड अंडर द कार्डबोर्ड तो वो मैग्नेट के अराउंड इस तरह से कैसे आएंगी? कैसे आएगी? अब जरा देखिएगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजी है, इंस्टाग्राम की एक वीडियो है, जरा ये चेक कीजिएगा। इसमें मैंने यही काम किया हुआ है प्रैक्टिकली। चेक करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सर आप इंस्टा के ग्रुप पे भेज दें। ओह माय गॉड, आपका व्हाट्सएप क्यों नहीं चलता बेटा? सर it's saying कि update करो, but then my Google account has some issue, so it's not updating. I don't know. गूगल अकाउंट तो यूं ठक्कर के मिनट में बन जाता है। No, I'm gonna figure it out अभी आज बाद में। हाँ ना, क्योंकि ठीक है, देख लिए बेटा, सबको मिल गई वीडियो? यस सर, देख ली। ठीक है, सो अलाइनमेंट हो गई है कि नहीं सारी की सारी? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है इतना फोकस्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन खैर है, बहरहाल ये अलाइनमेंट ऐसे हो जाती है। सो 10,092, वाह, 922, राइट, सेट है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटे? कोई मसला, कोई परेशानी? So this is one way to figure out how the magnetic field line of a bar magnet would seem to be. You have just found its structure. ऐसी alignment है, ये pattern है, but problem क्या है? Problem ये है कि you do not know कि इसका north कौन सा है, इसका south कौन सा है ना? That's the problem. Is it? Yes, sir. So is there any idea कि हम इसका north south कैसे identify कर सकें? Sir, you're gonna take a magnet, and then if it repels or attracts, then we're gonna know कि अगर एक end पे अगर it repels, so that's obviously the north pole, while using the magnet south pole, and if it attracts, then that's अच्छा, okay, Hina, you were saying something? सर अगर हमें इस लाइक फॉर्मेशन को ख़राब नहीं करना तो बाय यूजिंग दिस वे इट्स नॉट पॉसिबल कि फिर ये सारे आयरन फिलिंग्स तो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली, है ना? या तो फिर क्या करें? कोई तो होगा हल। Sir, we can take two different magnets and place it on each side. ना,
मुझे सारे एरोज, ये जो फील लाइंस है ना, मैंने ऊपर एरोज बना के दिखाए थे आपको, ये किधर गया, मैंने मिटा दिया। ऑलराइट, सो मुझे पूरे के पूरे एरोज जो हैं, ये सारे एरोज आइडेंटिफाई करने, ये एरोज मैं कैसे बनाऊं इनका। Sir, the south end, if you place like the opposite, so it's gonna attract because it's always away from north towards the south. राइट, And the closer the field lines means stronger the magnetic field. चलो मैं अब कराता हूँ, देखो, यू मस्ट सी माई स्क्रीन नाउ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? जी sir. व्हाट कैन यू सी? जी सर। व्हाट इज रिटन? सर a compass and a magnet. Compass. Yeah. read this line, someone. Move me or me. Move. All right, so देखो, I'll just place a bar magnet as you can see in this animation, this bar magnet, and definitely it would have its magnetic field as you can see. And now I have removed the magnetic field. So let's say I decide to move this compass. I'll move this compass and I'll bring it to one end. Let's say I bring it here. I've brought it. I hope you can see my cursor near the compass. Yes. Yes. I have brought this compass here. Now what I'll do, I'll mark the two ends of the compass. Let's say I mark the bottom end as X and the far end as Y. Okay. Now let's say this far end, which was Y, I'll lift my compass and I'll place it right there where I had marked Y. Where I had marked Y. Let's say यहाँ किया था, ठीक है? Then I'll mark the third point over here on the far end. I'll lift it again and I'll mark another point. The fourth point here, I'll lift it again and mark another point. I'll lift it again, mark another point. I'll lift it again, mark another point at the far end. Lift it again, mark another point. And whenever I lift, I'll make sure कि जो आपका compass का tail है ना, ये red वाला, it aligns with the previous point. It aligns with the previous point. And then आपने next point mark करना है. And I'll continue this until I reach the other end of the magnet. Until I reach the other end of the magnet. So what will I see? I will see dots like these. I will have made dots like these. ये dots क्या represent कर रहे हैं? ये dots एक magnetic field line को represent कर रहे हैं. I'll join all these dots and I'll get a magnetic field line. What will I get? Sir, your Magnetic screen is field line. invisible. Hmm? Your Sorry? screen is invisible. Okay, the other one is not visible. Right. I'll just share that too. अच्छा एक मिनट, मुझे फिर एक काम ये करना होगा, इसको स्प्लिट स्क्रीन करना होगा। और अगर इसको स्प्लिट स्क्रीन करते हैं तो ये तो फिर नाराज हो रहा है। चलो एक काम और करते हैं, ये फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, सो ये देखिएगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं ना, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. सो एज आई मूव द मैग्नेट, तो मेरे पास ऐसे डॉट्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। यस, मैंने इन डॉट्स को Yes. ज्वाइन कर देना है,
इन डॉट्स को ज्वाइन कर देना एंड व्हेन आई जॉइन द डॉट्स I will get a magnetic field line. I will get a magnetic field line, right? And then I'll lift my compass and place it some other point, just say here, and then I'll repeat the process and make another line. So this is how I will get different magnetic field lines. I will repeat the process at other points and on other sides of the magnet. As a result, I'll get a perfect magnetic field around my bar magnet. Right? Is this understood? Sir, वो तो सही है, but like, how will we get to know about the direction? ऑलराइट सो डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है बेटे? ये जो आपका नीडल पॉइंट कर रहा है ना रेड वाला, दिस इज द एरो हेड, दिस इज द एरो हेड, रेड वाला. एंड वी नो वन मोर थिंग, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्थ, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ. तो देखो ये जो कंपस का रेड होता है ना, इस कंपस के अंदर जो बना हुआ होता है नीडल, दैट्स also a magnet, that's also a magnet. तो जाहिर है ये वाला एंड जो रिपेल हो रहा है, that's moving away from north, that's moving away from north. I do not know कि ये जो नीचे वाला पोल है ये नॉर्थ है कि नहीं, but I know कि ये जो रेड वाला पोल है ये नॉर्थ है कंपस का, right? So if it's being repelled, that means bottom पे कौन बना है? नॉर्थ बना है. So eventually my field line direction would be just this way, right? Yes. Have I made myself clear? So Yes, Yes, sir. sir. what will I do? At first, I'll take an A4 size paper. I'll mark the north pole on my paper, just like this, the one I have marked over here. And then after doing that, what I'll do, I'll place my bar magnet and make its outline. I'll place my bar magnet and make its outline. Why Okay. is this outline important? Sir, कौन सी outline? ये जो मैग्नेट की मैंने बाउंड्री बनाई है पेंसिल से, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? The square? या द रेक्टेंगल अराउंड द मैग्नेट, ये वाला देखो, ओ मैग्नेट ही गया. Sir, the size would represent the field lines and their strength. तो अगर छोटा होगा magnet तो it'll be like मैं जब ये further away एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, field नहीं, lines. मैं जब ये एक्सपेरिमेंट करूंगा ना बेटा, जैसे ही मैं पेपर पे अपना मैग्नेट प्लेस करता हूँ, तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? मैं जल्दी से जाके उसका आउटलाइन बनाऊं. क्या बनाऊं? उस मैग्नेट का आउटलाइन. क्यों? Oh, obviously ये जाहिर है अगर आपको align measurement सही से करनी है तो you're हम्म. gonna need to trace it. Okay, so उसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट देयर इज हाई चांस माय मैग्नेट डिसलोकेट्स, अपनी जगह से हट जाए. So I know where it was, so I can get it back to the original position, right? Right. So that's the reason. Understood? Any problem, any confusion? No, sir. This is how the No. So, field sir, ये pattern. question आएगा that we have to draw the entire diagram. Yes, ये देखो ये पूरा आता है, ये मैंने लिखा हुआ है इसीलिए इतनी मेहनत से कलरफुल बना के. कोई रीड कर सकता है इसको जल्दी से? I think Shanzi is good at reading. Place the bar magnet at the center of the paper such that a north pole of magnetic points north on the paper. Okay, north pole of magnet. सर आपने क्या लिखा है ये? बेटा north pole of magnet. North pole of magnet points north on the paper. Yes. Starting near आप one. मतलब क्या है इसका? आपने इस मैग्नेट को ऐसे प्लेस करना है, कि जो आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो कहाँ पॉइंट कर ले? North. पेपर के नॉर्थ की तरफ, पेपर के नॉर्थ की तरफ, राइट? सो आपको अपने मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल तो पता है, बस आप सिर्फ उसकी फील्ड लाइन ढूंढने जा रही हो, उसका फील्ड पैटर्न ढूंढने जा रही हो, राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. Starting near one pole of the magnet, mark positions x and y of the two ends of the needle as shown. सही है. सो देखो आपने ये नीडल यहाँ पर बना दी, एग्जामिनर को शो कर दिया, एक्स और वाई मार्क कर दिया. नाउ इट्स इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन.
कि मार्किंग कहाँ करनी है। ठीक है, आगे। Move the compass until one end is exactly over Y. Mark the position of the other end. तो अब कंपास को आपने मूव करा ताकि कंपास का जो टेल है पिछले वाले को पॉइंट कर ले, पॉइंट जो आपने बनाया हुआ है वाई। जी sir. आगे। Repeat the process of making dots till you reach your south pole. Join the dots to draw the magnetic field line. सो आपका प्रोसीजर यहाँ पर हो गया कंप्लीट, प्रोसीजर यहाँ पर हो गया कंप्लीट, राइट। आगे। नीचे Sir, वाला। आगे का अच्छा, repeat the whole process at different positions to make one magnetic field line. To make more magnetic field lines. Right. So is this clear? Any problem, any confusion? No, sir. वर्क पेपर में और क्या आ रहा है इसके अलावा? बस यही आ रहा है। Okay, so these are the field patterns. This is how the field pattern for a bar magnet would look like. ये आपको बनाना आना चाहिए. At least 2 loops up, 2 down, 1 straight line to the right, 1 to the left. Field lines direction pointing away from north towards south. This is the field pattern for 2 magnets of opposite poles. Away from north towards south. The same, away from north towards south, away from north towards south, right? This is the field pattern for again 2 magnets or 2 poles, but this time this is like pole. So क्या हो रही है बेटा? Repulsion हो रही है यहाँ पर. क्या हो रही है? Repulsion, Repulsion. right? This is how the field pattern between 2 magnets would look like. Once again, देखो ये north pole है, ये नॉर्थ पोल है, राइट। सो यहाँ पर वंस अगेन रिपल्जन हो रही है। ये नॉर्थ पोल की वाली लाइन यूं आना चाह रही थी, नॉर्थ पोल की वाली लाइन यूं जाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ बेटा? रिपल्जन हो गई, तो ये वाली उधर चली गई और ये वाली नीचे इधर आ गई, तो वंस अगेन रिपल्जन। क्या है? रिपल्जन, राइट। Yes, sir. उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। सलाम। घर पे जी बताइए। नहीं नहीं। खैरियत? कब? ठीक है, चले आप वेलकम, मोर देन वेलकम, कभी भी आप आ जाएं। ठीक है, चलो हमें इंतजार रहेगा, आ जाइए आ जाइए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। All right, so is this understood? Any problem, any confusion बेटा? No, sir. ओके, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। ये देखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील। दो मटेरियल्स हैं आपके पास, एक है आयरन, दूसरा है स्टील। दोनों की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। आयरन इज बेसिकली कॉल्ड अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको बेटे? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एंड स्टील, इट्स अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल।
Iron can easily be magnetized and demagnetized. Iron can easily be magnetized and demagnetized, right? While steel is a hard magnetic material. Why? Because it's difficult to magnetize and demagnetize. Since iron is a soft magnetic material, it can be easily magnetized and demagnetized. So एक weak magnet भी इसको magnetize कर सकता है. स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इट्स डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी मैग्नेटाइज करने के लिए. अगर मैं बात करूं यूजेस ऑफ आयरन की, तो आयरन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं बेटा? वो मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती हैं. जैसे हमारे पास स्क्रैप यार्ड में होती है. स्क्रैप यार्ड में आपके पास बहुत सारा स्क्रैप होता है जो जो मैग्नेटिक भी होता है, नॉन मैग्नेटिक भी होता है, राइट? उसमें से अगर आपको मैग्नेटिक चीजें अलग करनी है तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑन करोगे. इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑन करके सारा का सारा मेटल वहां से कलेक्ट हो जाएगा. अब जाहिर है आप ये तो नहीं चाहोगे कि जो आपने मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच्ड रहे, इज इट? या आप चाहोगे कि वो अटैच रहे? नहीं, डिटैच है. डिटैच हो जाए, यानी जहां पे आप उसको डंप करना चाहते हो आप, तो अब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑफ कर दोगे एंड जितने भी आपने मेटल वहां से कलेक्ट किया हुआ है वो वहां पर आप डंप कर सको, राइट? सो आयरन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब हमें इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि जब वो मैं चाहूँ मैग्नेटाइज हो जाए, जब चाहूँ डीमैग्नेटाइज हो जाए. ऐसा ना हो कि स्टील की तरह अकड़ जाए. ठीक है, मैग्नेटाइज तो कर दिया आपने, अब डीमैग्नेटाइज करके दिखाओ. So basically steel is difficult to magnetize. एक दफा आपने मैग्नेटाइज कर लिया तो उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो. तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में चूंकि हम चाहते हैं स्विच ऑन हो मैग्नेट बने, स्विच ऑफ हो मैग्नेट ना हो, राइट? सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आयरन यूज करते हैं. देन ट्रांसफार्मर के जो कोर्स हम बनाते हैं जिसमें हमारे पास इंडक्शन होती है, उसमें आपके पास वंस अगेन मैग्नेट्स यूज करते हैं. मैग्नेटिक सॉरी आयरन यूज करते हैं. मैग्नेटिक शील्ड्स जिसको मैग्नेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं, ये भी अब हमारे सिलेबस से निकल गया है इसका सारा प्रोसीजर. लेकिन मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग में भी हम आयरन यूज कर रहे होते हैं. जबकि मैं बात करूं परमानेंट स्टील की, तो स्टील परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, जैसे कि बार मैग्नेट. इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. उसके बाद ये सारी यूजेस हैं मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की. अगर मैं बात करूं मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, तो दे कैन बी यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर क्या होता है? इट्स बेसिकली जस्ट लाइक एन एमीटर, एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस